landscape. Get ready for insights into emerging challenges in the IT sector and advanced strategies for mitigating cybersecurity threats. Over to you, sir. Thanks, Nimisha, and thanks, Aarti. So, before we step into it, right, as rightly mentioned by Aarti, right, technology is definitely easing our life, but on the other side, it is actually posing challenges in terms of making sure that our data is protected, right? And that's where the cybersecurity, plays a key role in terms of managing our data to ensure that our data is protected from malicious attacks and obviously people stealing our data, important data. So I'll share my screen. Just give me a second. I hope you all can see my screen. Are you able to hear me? And are you able to see my screen? Yes, Yes, sir, sir. you are audible. Okay. So I mean, cybersecurity threat landscape in India, right? So as we just mentioned, technology continues to evolve. So we have to make sure that cybersecurity is the, helping us to make sure that all our data is protected, right? Uh, a very short introduction about myself. I have almost 24 years of corporate career experience in information technology. I have managed technology day-to-day operations, production support, service management, service delivery, service transitions. These are the key core expertise I have. Other than that, I manage a very large accounts in corporate world, manage stakeholders, and obviously customer manage strong customer relationships. Right. So this is a very short introduction about myself. I'll move on to the next page. Um, so these are the very key interesting facts, right? I'm sure you must be amazed to see these facts. So do you know how many cyber attacks we get on per day basis, right? So as per the news and the case studies, we get almost 2,200 attacks every day, and which breaks down to nearly, one cyber attack every 39 seconds. This poses a lot of financial losses to big organizations, right? And this definitely plays a very key role for us to make sure that we protect our data, right? And that's where the cyber security is improvising day by day, right? Normally, the cyber attacks happens because of the mistakes. So 95% of the uh, attacks which happens are because of human errors, right? We mistakenly share our passwords, or we mistakenly give information to somebody else who can actually then using that information enters into our into our financial details or maybe personal details as well. So so these are the key facts what we have available from cybersecurity perspective. If you just look at from the market size perspective, almost 182 billion. It's a industry which is growing, and it's growing almost at 12% CAGR, which means like by end of 2028, this industry will be approximately 314 USD billion dollars, right? So this industry is growing, and obviously the challenges which we keep seeing on our technology environments is definitely pushing us to strengthen our infrastructure and make sure that we provide a secured environment, right? So if I just talk from early ages perspective, right, we used to see very minimal cyber attacks, right? It was almost negligible, right? We used to heard about in 1980s, right? It's about viruses, worms, those kind of small virus attacks we used to have. And the reason behind was that because we were having very limited computer systems, right, which we want to protect, or maybe you can say very limited infrastructure we used to have, which was like for us to protect. And there were signature based detections, right? Antiviruses were signature based detections which used to protect our environment, right? But now if you look at from the current infrastructure perspective, right, the way e-commerce is growing, online websites are coming in,
the kind of applications we are seeing in mobile apps, we are seeing in nowadays coming in on day-to-day basis, it becomes it becomes, I mean, it is this is leading a surge in hacking, identity theft, and financial frauds, right? And the way the cloud environment is also growing today, it is very important for us to secure an environment, right? Be it a virtualized environment or a cloud environment, right? The industry is moving from, I mean, we are putting more emphasis on threat intelligence, the behavior analytics, and anomalies which are detected in our environment, right? So there is a complete paradigm shift nowadays. What we used to have in 1980s or maybe in 2000, early 2000, now we are seeing a different kind of security which is getting implemented on our infrastructure, right? These are the few topics which I'm going to cover today. I'm going to cover how the cybersecurity, what all we have from Indian cybersecurity landscape perspective, how the cybersecurity is significantly helping IT sector, and what are the ways to mitigate those risks, and what are the advantages or the advanced strategies we have for mitigating cybersecurity threats. So these are the few three four topics which I'm going to cover today. So, I mean, if you look at the Indian cybersecurity landscape, right, the first priority item what we have is financial cyber crimes, right? India has witnessed a rise in financial crimes, right, including online frauds and phishing attacks. So you must have seen nowadays, right? People just give a call, right, and they ask for some information, financial information from you. Maybe you share sometimes OTPs with those people, right? And then you later realize that they have stolen money from your bank accounts, right? So that normally happens because this financial cyber crime is increasing day by day, and this is where, I mean, very often they targets individuals, banks, and institutions to steal sensitive information, right? So cyber crime is the top most threat we have seen in this industry, right? There are ransomware attacks, right? So if I just talk from ransomware attacks perspective, so what happens is the attacker actually encrypts your data, right? And they then demands for money to give you that particular data, right? So data privacy is definitely important, but then what happens in ransomware attacks is that, I mean, they encrypt your data and you're no longer able to access your data, right? And they ask for money to give that data back to you, right? So this is the second important landscape which is very important for us to look at. Now, from infrastructure security perspective, right, the way the infrastructure is going, right, the transportation system, healthcare facility, online banking, these are all, I mean, key infrastructure. Um, I mean, these are the key infrastructure wherein we have seen the maximum cyber attacks which happens, right? So to ensure that we secure our infrastructure, right, we have to make sure that our infrastructure is secure, right? The mobile applications, the way we are growing in the mobile industry, right, every day new applications are coming in, right? And in the mobile world, we have seen a lot of malwares, malicious apps. The moment you install it, actually takes the control of your mobile phone, and your data and your privacy is I mean, compromised, right? And your security is compromised. Then we have social engineering, right? Phishing attacks, like email security, needs to be enhanced. Security related to, I mean, this actually helps us to make sure that the social environment is protected, and we are able to, I mean, make sure that we protect our, I mean, Facebook accounts or the other Instagram accounts. We are able to protect those environments, right? So we have to focus more on social security, social engineering as well, right? Now, if you look at from the cyber security perspective, how exactly it is posing threats to an IT environment, right? If you look at from cloud security risks perspective, right, for us to make sure that we mitigate these risks in our cloud security environment, we'll have to implement strong
access controls. We have to encrypt our data which is lying on the cloud environment. We have to do regular audits to make sure that we give a very we give a good security to the cloud environment, right? And we have to definitely implement some strategies to make sure that we are able to identify those risks in advance, and we are able to monitor them as well, and obviously uh, do a proactive approach in terms of securing our cloud environment, right? The IoT is like Internet of Things, right? And in these, we have to make sure that all our devices, uh, which are which are smart devices, are able to. We are able to secure those devices by implementing patches and deploy some good network segmentation on it, so that we are able to identify those devices and secure them wherever required. Now you look at from the remote work challenges perspective, like people who are working from home, right? Today, a lot of people work on a hybrid environment, right? It is becoming very difficult to protect that data, right? And in order to protect that data, you need to implement and secure the VPN, right? You need to protect the endpoint and implement the VPN, which is like virtual private network. You need to create that security within your environment, so that whenever you access that particular environment, it's secured, and nobody is able to nobody is able to judge who's connected at what time the person has connected. So this the environment is connected, the connections which are connected to our servers are all secured. So we need to implement VPN and ensure that the endpoints are protected. We also need to implement multi-factor authentications, right? So whenever somebody logs into the environment, you need to make sure that you actually authenticate maybe through an OTP, or maybe some kind of a multi-factor authentication applications. There are a lot of applications also available. So we need to make sure that remote challenges are taken care of. These are the few more things. Let's say, you want to protect your supply chain attacks, right? So you need to make sure that your third-party vendors whom you are onboarding are all, following the security measures and compliances when they are actually connecting onto your environment, right? So regular audits and monitoring of those security third-party components are really important. I already covered ransomware and cyber extortion. So, we need to back up our data, critical data backup on a regular basis, so that even if there is a ransomware attack, right, at least your data is protected, right? Normally, what people does is they keep their data on a desktop, right? They don't have any backups on anywhere else, right? So you can use, you can use some of your secure devices, or maybe you can use Google Drives or OneDrive. So those kind of uh, uh, drives are available for us to back up our data, right? So it always good that we back up our data, right? Cyber security talent shortage is also there, right? The way the industry is growing, right? I've seen very few companies actually take care of training programs which actually, educate them about the cyber security attacks, and what are the important measures we need to take care of to mitigate the risk of these cyber security attacks, which keeps happening, right? And this is, from regulatory compliances perspective also. We'll have to regularly conduct compliance assessments and implement robust internal policies to make sure that we protect our data, and we manage these compliances effectively. Okay. So, adopting a holistic cybersecurity approach that combines technology, policies, and employee training is crucial to effectively mitigate emerging threats in the IT sector. We need to regularly reassess and update cybersecurity measures to stay ahead of evolving risks, right? So, if you don't regularly assess our our infrastructure, our devices, our cloud environment, we will not be able to evolve and reduce the risk which keeps happening in our environment, right? So these are few of the advanced strategies which are helpful in mitigating the cyber threats. Uh, Zero trust architecture, right? In the zero trust approach, what used to happen is we don't trust anyone, right? Whenever you get access to any system,
you get authenticated, and you have to get authenticated, right? So it involves continuous authentication and strict access controls, which can be monitored very easily, right? So we have now ZTNA, which is like zero trust network architecture. So instead of VPN, now we have ZTNA, which is like zero trust approach, right? So every time when you connect, it authenticates and it makes sure that the legitimate people access our infrastructure. Okay. Behavioral analytics, right? So based on the data which is available, right, in our network environments, we can actually क्या? learn the basis, the हाँ हाँ algorithm, सब the आ गए. behavior the system is वो behaving, आयुषी right? नहीं था We ना, और can कौन था? do a behavioral analytics, and based क्या? on that we can implement security and make sure that our data is protected. So nowadays there are bots which keeps a track of behavioral users behavior, and then based on that they protect the data. Okay. You can implement continuous security monitoring, right? You can put a network operation center or a security operation center in any of your organization, and you can protect the data by regularly monitoring the network traffic, the system logs, and you can definitely detect these anomalies, and then mitigate that risk, and in protect our data the moment we see or detect any security threat in our infrastructure, right? The multi-factor authentication is like you can implement that the moment even if somebody has the ID and the password, right, you will not be allowed to get into the system unless the MFA is authenticated, right? You must have seen in nowadays in a banking environment, when you log into the banking applications, you get an OTP. The moment you get an OTP, then when you put that OTP into the system, then only you're authorized to access and log into that particular system, right? So we can implement multi-factor authentication and ensure that it gives a dual security, right? We can create multiple simulations, crisis simulations and incident response drills, right? You can deliberately you can send communication emails within the organization to check how people are um, how people are aware in terms of which all things they need to access and which all things they don't need to access, right? Sometimes I've seen that the phishing emails which comes into the system, right, people unknowingly click on those phishing emails and they give access to their systems, right? So we need to do some uh, regular crisis simulations and incident response drills, which helps us to identify what is the rate of people are able to access our environment very frequently or not. Okay. uh, I just have a very, a last line. I just want to make sure, give you as cybersecurity is not just a technical challenge; it's a mindset, right? As I just mentioned previously, it's just a mindset, right? If you know that I don't have to open emails which are not relevant to me, or if I know that these emails could harm my system, right, I will be able to help and contribute in cybersecurity, right? It's a culture, right? We need to develop a culture within our environment, and we need to make sure that the cybersecurity is not just a mindset; it's culture also needs to develop, and a commitment to the safeguarding the digital fabrics of our interconnected world, right? So it is our commitment, and safeguarding the digital information, right? So it is our responsibility to make sure that we protect the information, not just the information which is which is my personal information, my financial information. It is right protecting everyone's information, right? In an organization, I've seen, right, in the cyber attacks, what happens is not just an individual information is compromised; it's the whole organization's data is compromised. And because of that ransomware attack, the complete organization was shut down for 30 minutes or maybe 1 hour, right? And that was a huge financial loss to the organization. So as an individual, it is our responsibility and commitment that we adhere to cybersecurity and the measures which are with us today. So that's all from my side. If you have any questions, you can ask those questions in the Q&A session, or if you want to ask anything right now, I'm absolutely available for that. Any questions from anyone? No. Okay. Over to you, Nimisha. Yes.
Thank you so much, sir. It was a wonderful session. And if there is any question by anyone, we will be taking the Q&As at the end of the sessions. And you can write down your questions in the chat box and we can take it at the end of both the sessions. So now moving forward, we have Mr. Suyash Avasthi, software developer at Kartikal, who will enlighten us on the role of computer emergency response team in India and the government's approach to mitigate cybersecurity threats. Over to you, sir. Okay, so thank you so much, Nimisha, as and thank you to you, Nikhil sir, also because you have told so many interesting things which even I don't know. So I am going to share my screen. Okay, so I start my presentation with my little introduction. My name is Suyash Awasthi, and I completed my Masters of Computer Application from NIT Jamshedpur, and I am currently a software developer at Kratikal Tech Private Limited, which is a cybersecurity company which provides cybersecurity to the different companies. So let's start with the today's discussion, which is cyber threat landscape and role of certain. So, in nowadays, a term CERT become very famous in today's generation. Let's understand what is this term means. What is CERT? So it is basically a computer emergency response team. And let's understand by taking a simple example, like to control the things in India or in the world, there exists a governing body. So there is governing body exists for everything to control, like Ministry of Defense, Ministry of Education. So similar to that, CERT is used. CERT is a governing body which exists in India as well as in the outer countries. It comes under Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of India. So, CERT basically protect us from the hackers and cyber attacks and the tricks they use. We can also say that CERT is a just like a defense system of the internet, as we see in the Marvel comics and novels that superheroes saves us from the evils and they save the world. CERT is also a superheroes of this internet world, which saves us from the cyber attack. So this is what CERT is. Now let us understand why we need CERT, why CERT is very important. So CERT is like a policeman. He rescues us from the cyber attacks or the viruses. So if in a company or an employee or an individual find that yes, there might be a threat, and if he finds something suspicious, then he report to the CERT. And what CERT is does, the companies, there are I guess almost 150 companies in India which comes under the CERT. So one of these company or many of these go and check that what these virus actually are, and they rescue that company from the cyber attacks. Now, CERT keeps an eye on the hacker and tell us how to stay safe. They basically keep track of on the hacker's pattern, that what are the different patterns they follow. They predict the future, that how can they attack, what they already did. So they basically keep a track of on the hackers. They share tips on strong password and avoiding tricky emails. As I already mentioned, CERT is a governing body, so its responsibility is not only to say something. It also has a very, they share tips on strong password, just like they spread the awareness also. So CERT works together because threat may come from anywhere. Sometimes the threat may be very large, like just left the one country, not even a 10 country together can save us from that type of threat. So CERT works together, like they works with other countries to make new tools and ways to protect against hackers. Like CERT is a common term, CERT is a common term. In India, it is known as CERT in, where in represent India. Similar to that in USA, there is a CERT USA, CERT China, CERT CHN like, and CERT Russia. So yeah, that's why we need the CERT. These are the responsibilities CERT plays. Now, now let us start our with our taking a very common example. Like I think everyone present here uses Uber once in a lifetime. So there is a very famous incident of Uber cyber attack 2022.
इसको आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर। एक 18 साल का हैकर था। 2022 में उसने ऐसा करा कि पूरी दुनिया की नजरें उस पे हो गई थी। आ, जैसा कि हमें पता है कि ऊबर एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड ऊबर जस्ट स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स ऑन देयर सिक्योरिटी. Okay, still they got hacked because Uber is a big company, so they use MFA. MFA means multi-factor authentication. Like in a WhatsApp, we see that WhatsApp constantly sending us message that enable two-factor authentication. Just like that, whenever a hacker try to hack in our network, they cannot hack just by one step. They have to deep dive into them. That's what MFA means. So, what that 18-year hacker did, he simply purchased the Uber employee credential from a dark web because he don't have access to that. And the secondly, he made an initial attempt but failed because Uber have a multi-factor authentication. Even if he have a user ID and password, the hacker is not able to break the system because Uber is protected by the multi-factor authentication. So after that, what he does is he contacted Uber employee via WhatsApp while pretending to be a member of Uber security. He just messaged him in WhatsApp and said, I am from the Uber IT team. Please enable my message. Only then you are able to log in again. So what he does is that the hacker then sent a flood of MFA notification to the employee phone to pressure them into succumbing to this request. Just please accept this request. Please accept आशु this मीटिंग में request. नहीं है। So finally put an end देख to लो, this मुझे नहीं लगता, पता नहीं notification क्या है storm. उसका, देख The लो कहाँ है। Uber employee approved an MFA request, क्या? granting the hacker network access, which हाँ, क्योंकि ultimately led पहले to the गेस्ट का data खत्म हो breach. गया, दूसरे So गेस्ट this वो is जो the है वो पढ़ point रहा है where स्लाइड Uber से, is तो उसका ज्यादा टाइम completely, लगेगा नहीं। lost its ठीक है। data. Uber get hacked and its multi-factor authentication completely break. So Uber, I already told, is like it really spent millions of US dollar, but still it got hacked. So just think where we stand. So I hope you all get that how Uber got hacked and how it's necessary to present these governing body like CERT. So moving forward, what are the things that CERT do in India and in the world? The first responsibility is incident handling and response. Basically, whenever an employee or an individual or a company find that there might be attack or they got hacked, then they simply report to the CERT, and the companies which comes under the CERT, they go and find that where is the data breach, and they find the solution and fix the things. And after that, CERT providing security awareness training. Like I already mentioned, it is a governing body, so its responsibility just not only to fix things. Instead of it, it also aware the people, conduct regular seminar, and aware the people of their countries. And CERT generally forecast and alert about cyber incidents, like they aware us and they predict the future, find the tricks and tactics used by the hackers. They just find they aware data breaches and how these things can be fixed. And the last मेरा thing is माइक एंड कैमरा नहीं ऑन vulnerability हो रहा। assessment and management. तो इसको समझने के लिए और मैं आप कर लोग मेरे बोर पास ना हो, एक इसको मोबाइल मैं है, ये हो ही एक नहीं रहा इसमें। कहानी के मेरा तौर पे जो आपको फोन से सुनाना मैं चाहता कर हूँ। रहा हूँ ना, इससे वीएपीटी मेरा कंट्रोल ही बेसिकली खत्म हो एक गया है। तरह का असेसमेंट होता है जो कि हर क्या? बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी करवाती है, देखता हूँ ताकि ज्वाइन हमें होके। ये पता चल सके कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी कितनी ज्यादा सिक्योर है। इसको हम ठीक लोग है। बेसिकली बोलते हैं ठीक है। वीएपीटी, vulnerability assessment and penetrating testing. ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जो एथिकल हैकर्स या फिर गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैकर्स होते हैं, वो जाते हैं उस वेबसाइट के अंदर, उनके डेटा नेटवर्क के अंदर, जिसको भी अपनी ये असेसमेंट करवाना होता है। वो जाके चेक करते हैं ऐसे कौन कौन से लूप होल्स हो सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ से हैकर्स अटैक कर सकते हैं। उसके बाद एक एक लूप होल पे जा करके वो सर्टिफाइड हैकर्स या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैकर्स जाते हैं और चेक करते हैं कि किस लेवल का हार्म कर सकते हैं एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके। उसके बाद वो उन चीज़ों को ठीक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझें, सपोज दैट किसी का एक घर है, तो घर में एक जगह खजाना रखा हुआ है, बेडरूम में काफी सारे पैसे रखे हुए हैं वहां पर। तो कोई चोर आता है चोरी करने के लिए, उसके पास ऐसे कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, हाउ मैनी वेज अ थीफ हैव where he enter in the house, like he can come from the door, he can come from the window, he can come from the roshandan and from the balcony. So these are the different types where the thief enter. And suppose that if a thief enter from the bathroom, and but the door of the bathroom is locked from the outside, so
यहाँ से इसका मतलब हुआ कि चोर तो अंदर आ गया है बट वो हमारी तिजोरी तक नहीं पहुंच पाया है। और इसको टेक्निकल टर्म्स में समझें तो वो हमारे वेबसाइट के अंदर तो घुस चुका है चोर, उसने वहां तक हैक कर लिया है करने वेबसाइट, बट वो पूरी तरह से डैमेज नहीं कर पाया है। जो यूजर का जरूरी डेटाबेस था, जो बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, वो नहीं कर पाया, बट स्टिल इट इज अ थ्रेट। तो उसके बाद जो भी टेस्टिंग टीम होती है वो इन चीज़ों को फिक्स करती है जा करके। Now, let us understand what are the consequences of data breach. Like whenever a product got hacked, then they completely destroy the company. They completely destroy that product. And let us understand in this slide. Like we all know that definitely there will be a financial loss if a website got hacked or a hacker attack on a country or anywhere, then there might definitely be a financial loss, we all know that. And the second one is impact on reputational damage. Suppose you love Uber very much and you always book a cab from the Uber, but you got to know that your data is not secure now because hacker hacked the Uber. So now what you do, you choose the alternatives like the alternatives of the Uber, okay, Rapido, Ola, etc. So that's what where reputational damage. And the next one is service completely stop. So until and unless the government of that company, the company itself are not 100% sure that the data is safe and hackers are not able to attack them again, until and unless their services are not resume again. And the next one is prove themselves legally. They definitely have to prove themselves legally that they have the strongest network security, but hackers are more strong. That's why their data is hacked. And the next one is impact of sensitive data loss. Okay, so this is a very important point, and I want to discuss more on that point. Uh, can anyone from the audience unmute the mic and tell me that what are the different type of data loss? Like हम लोग तो अपने आसान भाषा में बोल देते हैं कि ठीक है उबर हैक हो गया, उसमें मेरा क्या घाटा है, मेरा तो केवल यूजर आईडी और पासवर्ड ही गया था। But can anyone from the audience please tell me that what are the different data loss we have to suffer Mm, apart from the like user ID and password? like there is Payment credit payment information. measures that are saved, we usually save them on the apps. Okay, and उबर पे Ad, हमारा लोकेशन एक्सेस भी होता है तो हमारा लोकेशन भी उनके पास जा सकता है। yeah, सर very एड्रेस good. होते हैं। Address, okay, very good. Financial data, health data, पर्सनल सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा लॉस। ओके, आप लोग एकदम सही हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जाती हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं अपने फ़ोन में सिक्योरिटी के लिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऐप में हम लोग अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं। तो ना चाहते हुए भी बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो हम नहीं चाहते हैं बट स्टिल उनके पास चला जाता है। लाइक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने व्हाट्सएप पे पासवर्ड नहीं लगाया होगा, है ना? तो आप लोग जब भी अपने में लॉगिन करते हैं, अपना ऐप फ़ोन चलाते हैं, तो आप उसमें अपने सारे के सारे ऐप्स में हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं। कई लोग होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन लगा देते हैं अपनी ईज़ ऑफ लाइफ के लिए, तो ये सारा डेटा उनके पास चला जाता है। हमारे फ़ोन के थ्रू हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स हो गई। अब सपोज़ हाँ, ऐप में एवरीथिंग को अलाउ कर देते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलाउ एक्सेस कर देते हैं, हमारे ना चाहते हुए भी उनके पास वो चीज़ें चली जाती हैं। सो वेरी गुड। ओके, सो इस तरह से हमारा जितना बायोमेट्रिक होता है, सेंसिटिव डेटा होता है, अपार्ट फ्रॉम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये सारा हैकर्स के पास चला जाता है। अब सपोज दैट हम लोग अमेजोन से कुछ परचेज कर रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अपनी सेव कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम क्या हो, जब भी उन्हें कुछ भी परचेज करना हो तो सिर्फ एक ओटीपी के थ्रू काम हो जाए, बार बार वो डेटा री एंटर ना करना पड़े। तो ये सारा डेटा उन पे चला जाता है। नाउ आज शायद आप लोग जान गए हो कि किसी भी कंपनी पे या फिर किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी कंट्री पे अगर साइबर अटैक होता है तो किस लेवल का डैमेज उनको सहना पड़ता है। Now, let's moving to next slide. This is basically one of the product of a cert. Like I want to show you how cert actually implemented. हमें कैसे वो बचाता है. This is the diagram I take from my website. Like I already mentioned, my company is a cyber security provider. It provides cyber security to other companies. So this is one of the product made by my company, and I am working on it. Like what इसमें होता क्या है,
कई बार ऐसे ईमेल्स होते हैं जो कि एक पर्सन पे ना जाके पूरी टीम में काम कर रहे होते हैं। सपोज दैट मैं एक टीम में काम कर रहा हूँ, आई एम अ बैक एंड डेवलपर, समवन देयर इज अ फ्रंट एंड डेवलपर, समवन इज अ टीम लीडर एंड समवन इज अ यूआई यूएक्स डेवलपर एंड समवन इज एचआर। सो पूरे ग्रुप में एक साथ आता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे कॉमन मेल आता है। तो ऐसी चीज़ों का हैकर्स बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन पे पर्सनली मेल आता है तो वो उसको आराम से चेक करेगा, उसको पढ़ेगा, उसके बाद ही उसको अप्रूव करेगा। बट जब ऐसे मास में मेल्स भेजे जाते हैं तो हैकर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा इंसान उसमें होगा जो उसको ईजिली अप्रूव कर देगा किसी भी रीज़न से वो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था कि हम लोग अपना एक सिस्टम होता है TPIR, थ्रेट कॉल फिशिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अगर किसी भी एक पर्सन को लगता है कि ये मेल मैलिशियस है या फिर किसी हैकर का काम है या इसमें वायरसेस हो सकते हैं, देन ही सिंपली रिपोर्ट दैट मेल, and what happen is that that will go to the spam folder, from inbox to spam folder to all the employees। जितने भी लोगों पे आया था सबके इनबॉक्स से उठ करके वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, और वो मेल स्पैम फोल्डर के जाने के बाद सिक्योरिटी टीम के पास जाता है। आईटी टीम उस मेल को चेक करती है। उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो मेल सही होगा या फिर मेल सच में हैकर्स का काम होगा। इफ दिस इज द वर्क ऑफ एनी हैकर एंड इफ दे फाउंड सम वायरसेस, देन दिस मेल इज permanent on the spam folder too from all the employees, and if there is not these things, then it simply revert back to all the employees inbox। या तो वो डिलीट हो जाएगा या फिर वो वापस से सारे employees के inbox में आ जाएगा। So this is one of the product and there are several products available in the market। So basically big companies purchase these type of product। Now, these are the list of the companies who faced a cyber attack, and almost all the companies you know, all the big companies you know, once in a lifetime got attacked by the hackers. Like you can see, Facebook, Adobe, JP Morgan, Microsoft, NASA in 1990s, Yahoo, Uber, Google. And interesting thing is, I think Yahoo in 2016 got cyber attacked by two times in the same year, two times, and the hackers hacked the data of 3 billion user. Like everyone who uses Yahoo at that time, the data of every user is being hacked at that time. Now, let us understand what we learn. As a cybersecurity enthusiast, I want to share some tips to you guys that what you can do to save yourself. The first one is very common: aware yourself as much as you can. You are all the students or the working professionals, you don't have much time to invest times in these type of things, but so whenever you got the responsibility, just keep attending these type of seminar. And the second one is, do not click on the malicious link. I repeat, never click on the malicious link, because there is a survey which told us 90% of the cyber attack happened only when someone clicks on a malicious link on a suspicious button. So remember that, never click on a malicious link। एंड द थर्ड वन इज यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। सो अगर किसी को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं पता या टेक्निकल टर्म्स में इंग्लिश में समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसको निखिल सर ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट मैं भी कर देता हूँ। आजकल आप लोग अपना मेल लॉगिन करते हैं, सपोज दैट अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अपना मेल लॉगिन करना है आपके फ्रेंड के लैपटॉप में जा करके, तो वो डिवाइस दूसरी है, तो आपका वो पहचान लेगा सिक्योरिटी सिस्टम कि हाँ, ये वो डिवाइस नहीं है जिसमें मैं लॉगिन, ये दूसरी डिवाइस है। तो उसमें भले आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड करेक्ट डालें, बट तो वो होगा वन स्टेप कि आपने वो चीज़ें सही डाली हैं। उसके बाद भी आपके पास मेल पे एक ओटीपी आता है कि जो आपके में पैटर्न दिखाया गया है, उस पैटर्न को क्लिक करें या उस नंबर को क्लिक करें, उसके बाद ही आप जा करके इस डिवाइस पे भी अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज। ये चीज़ सिमिलर व्हाट्सएप पे भी होती है, और आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह चीज़ एक्टिव हो गई है। सो as a new generation, please try to implement these type of things. These are very useful। And the last one is, use a strong and unique password। and I request you to all, please use a strong and unique password, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग को सपोज दैट इंस्टाग्राम में अपनी फोटो एडिट करनी है, हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कोई भी छोटा मोटा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद पहले उसको डिलीट कर देते हैं। बट उसमें लॉगिन करते टाइम हम लोग अपना फ़ोन नंबर देते हैं, अपनी लोकेशन इनेबल कर देते हैं, और जो यूनिक जो हमारा आईडी और पासवर्ड होता है, वो हम लोग जो जीमेल का होता है वही उसमें डाल देते हैं। जो हमारे यूपीआई के ऐप्स होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें जो
आईटी और पासवर्ड यूज करते हैं वही हम इन एप्स में भी डाल देते हैं. सो नेवर डू दैट. मेक सेपरेट पासवर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. Secure your important application with the unique password and strong password, and use different type of passwords for different types of apps. So yeah, that's all from my side. I hope you got some information from me, and if you have any question you can ask me. Thank you so much. Thank you so much, sir. I think the real life examples really helped all of us in understanding the session in a better and an easier way. Now we'll move forward to the Q&A round, and I think there are a few questions that I will read out. And other than that, if anybody else has any other question, please put it in the chat box, and our speakers will be happy to answer all your questions. Okay, so we have a question here. How to identify malicious link different from a genuine link? This is asked by Prince. Okay, so Prince, good question. So I want to respond to that question. Like यार, जो भी लिंक्स हमारे पास आते हैं बहुत ही कम ऐसे लिंक होते हैं कि जो कि जेन्युइन होते हैं. तो किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो एक बार उसको चेक जरूर कर लो. आजकल हमारे साथ बहुत ऐसा फ्रॉड होने लग गया है, चाहे वो हमारे पेमेंट रिलेटेड ऐप हो, सबसे ज़्यादा फ्रॉड उसमें होता है, या फिर एजुकेशनल ऐप हो. सो जस्ट थिंक ट्वाइस, लाइक यू कैन नॉट चेक दिस टाइप ऑफ लिंक्स. अगर आपको लगता है कि इस लिंक में कुछ है ऐसा, तो आप उसके बारे में गूगल करिए कि इस तरह की वेबसाइट रियली एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या फिर जो कंपनी आपसे पेमेंट मांग रही है वो सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं. उसके बाद ही आप आगे बढ़ें. Thank you so much, sir. Next, we have a question by Kapil Mehta. How to protect ourselves from Pegasus spyware? uh, Sorry Nimisha, I don't know much about the Pegasus spyware. I hope Nikhil sir will answer that. I also have very limited knowledge on this one actually. I think this is, while reading only, I realized that this is not a part of our session. So I'll move on to the next question. Um, I Dhruv, just wanted to add one thing yes, sir. on malicious links actually. In our organization, we used to actually deliberately send a lot of information on a link which is very equivalent to our solve, right? So like हमारा एक domain है solve.com, so solveeasy.com. So the security team actually they procured a different domain solveeasy.in or solveeasy.org, something like that, right? It was very similar to what our main organization. So it is an individual responsibility, right? You can get to know while reading the content itself कि वो phishing attack है या नहीं है. If in case you don't have any knowledge, or if you don't uh, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है कि वो लिंक कहाँ से आया और आपको नहीं पता, तो इट इज बेटर टू नॉट ओपन और नॉट क्लिक इट, राइट? इट इज वेरी गुड, इट इज एज गुड एज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो. इफ यू क्लिक ऑन इट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे इन्फेक्ट योर सिस्टम. सो इट इज बेटर कि आप उसको क्लिक ही मत करो, यू जस्ट स्किप इट और डिलीट इट इमीडिएटली, राइट? सो नॉर्मली इन माय करियर मैंने बहुत सारे ईमेल्स भी, आई गेट इट लॉट ऑफ ईमेल्स, राइट? सो मेरा हमेशा यही रहता है कि आई ओपन द ईमेल्स व्हिच आर रेलेवेंट टू मी, जो मुझे पता है कि रेलेवेंट रिलायबल सोर्सेज से आए हैं. मैं सिर्फ उन्हीं ईमेल्स को ओपन करता हूँ. आई डोंट ओपन एनी ईमेल अदर देन दैट. वो ऑटोमेटिकली मेरी क्वारंटीन हो जाती है एंड आई डोंट लुक एट इट. सो दीज आर द वे एंड इम्प्लीमेंट एंड प्रोटेक्ट योर डेटा, राइट? यू डोंट क्लिक इट, बिकॉज अगर आप उसे क्लिक करोगे वो एक बार आपके सिस्टम में के बाद वो क्वाइटली आपकी फाइल्स में जाके बैठ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट? एंड इट हैपेंस, राइट? वो जब उसको टाइम मिलेगा वो ऑटोमेटिक एक्टिव होगा, डैमेज करेगा, फिर वापस इनएक्टिव मोड में चला जाएगा. तो इवन एंटीवायरसेस विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट. आज की डेट में इतने मैलवेयर्स अटैक्स हो रहे हैं, उसको डिटेक्ट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज बेटर कि आप उसको ना खोलो, ईमेल को ही आप ओपन मत करो. दैट इज द बेस्ट वे यू कैन प्रोटेक्ट. Thank you so much, sir. Next, we have Dhruv Bansal has asked, what are your opinions towards the chances of using artificial intelligence as a means of data breaches and causing losses at a high extent? AI is definitely helping us to build our future, right? But
this is definitely, at least I have not heard artificial intelligence damaging to our infrastructure so far. अभी तक तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट आया नहीं है कि AI has, I mean, developed in itself the kind of damage or breaches and losses and all. अभी ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे सामने अभी तक नहीं आया है. So ये हो सकता है कि आने वाले 5 years 10 years में ऐसी चीजें भी आने लगे, but to my knowledge I have not seen these kind of things happening. So artificial intelligence is like, I mean, you are using an automated system or a scripted based system, right? So अभी तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट आया नहीं है. Thank you, sir. So, in fact, I wanted to add in my own personal experience, there is one aspect that we know that, okay, we are not supposed to click a link that we get. We must look into it before clicking any link. Even on Google, sometimes if we search for a website, there are three different kinds of websites we see. And in my understanding, I could gauge that sometimes .com is the one that is not supposed to be opened, and .in is more reliable, at least in the context of India. Is that correct? No, I don't think so, Nimisha. ऐसा कुछ correct है. It all depends the content which is there. Generally, links के अंदर आपको एक और link मिलेगा basically. जैसे अगर आप website open कर रहे हो, then it may not be of that difficult. इतना problem उसमें नहीं होगा. But अगर आपने website के अंदर जाके आपने किसी link पे click किया, right? It pops up, वो automatically pop up करने लगेगा multiple links को, आपने देखा होगा. So those kind of things when happens, it is better you close that website immediately, because वो pop-up में कौन से pop-up में आपके system में वो information load हो जाएगी, you don't know, right? So it is better you, I mean, and moreover जो malicious websites होती हैं वो Google पे वैसे भी rank नहीं करेगी. So when you search, you will always see relevant websites, authentic websites, because Google उन्हीं authentic websites को top पे दिखाता है जो users के लिए safe हैं, जिसमें content user से relevant है. सो गूगल सर्च में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको वहां पे इस टाइप की वेबसाइट्स नहीं दिखेंगी, क्योंकि गूगल खुद भी क्वारंटीन करता रहता है उन वेबसाइट्स को, बिकॉज अल्टीमेटली गूगल प्रोटेक्ट्स योर एनवायरनमेंट, योर डेटा, राइट? गूगल के पास भी हमारा बहुत सारा डेटा है, राइट? गूगल ड्राइव और बहुत सारी गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं, राइट? सो गूगल दे देमसेल्फ हैव देयर ओन साइबर सिक्योरिटी इनबिल्ट. वन ऑफ द कॉलीग को जस्ट आस्किंग कि हम गूगल ड्राइव पे अपना डेटा रखते हैं तो क्या प्रोटेक्ट होता है या नहीं होता है. सो आपने देखा होगा जब आप गूगल ड्राइव पे कोई डेटा अपलोड करते हो, इट टेक्स टाइम टू अपलोड, राइट? और व्हेन यू डाउनलोड, इट टेक्स टाइम टू डाउनलोड, राइट? सो व्हेन यू अपलोड और डाउनलोड, गूगल उसको स्कैन करता है डेटा को, और इंश्योर करता है कि जो भी डेटा गूगल ड्राइव पे जा रहा है वो लेजिटिमेट डेटा है, उसमें कोई मैलिशियस वायरस या कोई मैलवेयर नहीं है, या कोई थ्रेट तो नहीं है उसके अंदर. सो मैं जनरली अपना डेटा सारा गूगल ड्राइव पे रखता हूँ, कंसिडरिंग कि अगर मेरे लैपटॉप को कोई इशू भी हो गया तो एटलीस्ट मेरा डेटा गूगल ड्राइव पे सेफ है. So, in और जैसे, addition to that, I had another question, if I may. yes please. I recently was reading that Google is also planning to do away with the cookies that we allow, and it is the reason that was given was to protect the data and to remove the third-party influence. So, is that correct? व्हेन यू एक्सेस एनी वेबसाइट, आप जब कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो कुकीज आपकी आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे लोड होती है, राइट? एंड जनरली एज पर साइबर लॉ एज वेल, आप जब भी सिस्टम को ओपन करते हो, बी इट प्राइवेसी पॉलिसी और कुकीज, यू टेक द परमिशन फ्रॉम द यूजर. सो अगर आपको लग रहा है कि वो कुकीज रेलिवेंट नहीं है, वेबसाइट रेलिवेंट नहीं है, आप उसको एग्री भी मत करो. And from Google perspective, I have no idea how they are managing the cookies, but I have not got that pop up anywhere in Google के वो cookies के लिए वो acceptance मांग रहा है. Google is number one, I mean, company in any ways in the world, right? So obviously, why will they be actually doing all these behaviors? Okay. Thank you so much, sir. Sir, if there is any question that you would like to answer specifically out of these? Yeah, so there's one question. Suppose we download some app and they ask for login through Google. Yes, obviously, I mean, it all depends कि जो app आप download कर रहे हो वो authentic है. अगर let's say if you're downloading an app from a Play Store, right? Obviously, Google has control on those apps. So अगर आप Google से या Apple Store से download कर रहे हो या Google Store से download कर रहे हो, it's an authentic app. आप authenticate करके login कर सकते हो. There's no issues in that. And generally, अगर आपको रिस्क लग रहा है, probably you can have two mail IDs, one separately for generic
these kind of things. In one personal mail ID you can keep it for all your official emails. I normally keep two email ID separately. जो मुझे पता है कि मुझे ऑफिशियली कहीं पे मेल यूज करना है तो मैं वो ईमेल आईडी अलग है, और जो मुझे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करना होता है कीप इट सेपरेट. सो ऑब्वियसली दैट्स एन यूजर अवेयरनेस, राइट? आप जितना अपने आप को प्रोटेक्ट रखोगे ऑटोमेटिकली देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको वो इशू फेस होगा. There's one question there, HTTPS and HTTP. Basically, normally आप जब websites access करते हो, just make sure that you access HTTPS websites. HTTPS is secure socket layer basically. SSL authentication happens. तो आप जब वेबसाइट्स आप एक्सेस कर रहे हो, अगर वो HTTP पे एक्सेस हो रही है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. कोई ना कोई साइबर अटैकर जो है वो आपके पासवर्ड को स्टील कर सकता है. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप HTTPS यूज करें वेबसाइट्स रादर देन HTTP. अगर आप HTTPS वेबसाइट्स को आप जब एक्सेस करेंगे, यू सी अ सिक्योर्ड आइकन देयर, वो आपको पता लग जाएगा जब आप चेक करोगे वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि HTTPS वेबसाइट है. फ्रॉड हुआ था उसमें, एक पोस्ट ऑफिस वाले ने पेमेंट किया था, उसके बाद उसके अकाउंट से. हाँ, तो बेसिकली जो मैंने इनिशियली अपने कॉन्वर्सेशन में बताया था कि आई मीन पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउ डेज. दे फ्रॉड्स जो है वो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं. वो आपको ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे, वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, बट समहाउ वो होता ऐसा है कि वो आपके अकाउंट में से पेमेंट चली जाती है. व्हेन इट हैपेंड रियल टाइम इन फ्रंट ऑफ मी. आई मीन वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उसको कॉल आया एंड मेरे सामने के सामने उसने 20,000 रुपये उसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया. और वो दोबारा करने वाला था, उसको मैंने रोका, मैंने कि क्या कर रहा है ये, तो मतलब ये पेमेंट आनी है जानी है तेरे को. तब देन ही कुड रियलाइज, वो इमीडिएटली मतलब ही स्टॉप्ड इट. एंड देन वो बाद में फिर वो काफी मतलब आफ्टर 3-4 months वो पूरा इन्वेस्टिगेट हुआ इशू, एंड देन ही गॉट दैट पेमेंट. So I mean you have to be very careful when you are I mean as we said, right, टेक्नोलॉजी हमारे को बहुत हेल्प कर रहा है, बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप पेमेंट्स कर रहे हो, जब आप स्पेशली जब पेमेंट्स के टाइम पे आप ध्यान रखो कि आप पेमेंट सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो. करेक्ट. सो वो बहुत केयरफुली होना चाहिए. एनी मोर क्वेश्चंस? आई डोंट थिंक सो. I want to answer one question asked by the Yogya Suri. Like you said, Yes. you use Django and JWT in different project. I work to add in my resume. I want to know what are best practices used in the industry using these framework that I can integrate. So basically, अगर आप इस फील्ड में आते हैं IT फील्ड में, और अगर आप बैकएंड डेवलपर है, तो आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, then definitely you are going to use JWT, because there are some things which are very important and almost used by all the industry experts and everyone. So yeah, Django and JWT both are very good, and इसको सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है. आप जितने बड़े प्रोजेक्ट इस पे बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, एक तरह से पार्ट है प्रोजेक्ट का. सो यस, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन योर रिज्यूमे. Thank you. There's one question, ignore tab is safe for internet banking. So incognito, I mean this is basically this feature is given by the browsers basically. इसमें क्या होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोकल कैश के फॉर्म में आपके ब्राउजर में सेफ नहीं होता है. सो व्हेन यू क्लोज द ब्राउजर, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज गॉन, राइट? सो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिस्टम पे एक्सेस कर रहे हो, आपका अपना लैपटॉप नहीं है या अपना डेस्कटॉप नहीं है, तो आप इनकॉग्निटो मोड में ही आप लॉग इन करें. और इनकॉग्निटो मोड के अंदर आप अपना जो भी बैंकिंग करा आपने बंद किया, उसके बाद उसका कोई भी ट्रेस लोकल सिस्टम पे नहीं होगा. वो जो था वो सीधा ब्राउजर पे आया और वहां से आपका वैनिश हो गया. सो इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज इनकॉग्निटो. Thank you so much, sir. I think these were the questions for today. I would now request and invite Mr. Ashu Biduri to conclude the session for today. थैंक यू निमिषा. और वैसे तो निखिल सर ने और सुयश ने इतना बताया है कि अब इसको कंक्लूड करना वैसे बहुत टफ है. बहुत थैंक यू सर आपका, निखिल जी, सुयश भाई, आपका बहुत थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों के साथ शेयर की. और मैंने तो कल
भी अपने कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप इसको तुरंत नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे एक सजेशन है मेरा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को, आज जो भी सेशन में आपने सीखा है, आज आप इस इन्फॉर्मेशन को घर जाएं या मतलब अभी अपने उस पे सिस्टम पे अपनी बुक्स में, अपने जो आपके साइबर क्राइम की जो आईटी एक्ट की जो बुक्स हैं, उन सब में इसको एक्सप्लोर करें, उसमें देखें, तो आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने नहीं जा रहे हैं, आप एडवोकेट्स बनने जा रहे हैं। आपको समझना ये है कि आप इन चीजों को अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे यूज करेंगे, आप इन चीजों को कैसे यूज करेंगे, या आप अपने जूनियर्स को या आप अपने किसी भी क्लाइंट को इस तरीके के एडवाइस कैसे दे पाएंगे, या आपके किसी क्लाइंट के साथ कोई साइबर फ्रॉड कमिट होगा तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आपको अपने आईटी एक्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट के लॉज को, हाई कोर्ट के लॉज को और डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपको और चीजें समझनी है और सीखनी है। तो इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशंस जो कल और आज हुए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं और काफी एक इंफॉर्मेटिव सेशंस थे। आशु जी, जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रिंस ने पूछा है कि अगर आपका अम, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, लेट्स से आपसे किसी ने पैसा ले लिया अननोइंगली और आपका इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इन फाइनेंशियल केसेस मोस्टली, तो अगर आपके साथ ऐसा कभी भी होता है तो फर्स्ट इमीडिएट स्टेप है कि आप बैंक में कॉल करके उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करें और एफआईआर लॉक करें इमीडिएटली। बिकॉज कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी आगे इन्वेस्टिगेट तभी कर पाएगी जब उसका कोई एविडेंस प्रूफ अवेलेबल होगा। तो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है एंड रिकवर भी होगा, आई सीन के रिकवरी होती है, इट टेक्स टाइम, 2-3 महीने में रिकवर हो जाता है। बिकॉज बैंक्स भी उसको बहुत आई मीन स्ट्रांगली, साइबर क्राइम के अंदर भी बहुत एक्टिवली टीम्स इन्वॉल्व रहती हैं। तो अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट किसी के साथ होता भी है तो इमीडिएटली बैंक में रिपोर्ट करें, एफआईआर लॉक करें एंड जस्ट वेट फॉर द रिजोल्यूशन, यू विल गेट द रिजोल्यूशन फॉर श्योर। सॉरी मैंने चलिए आपको सर, इंटरप्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपकी इस बात में और ऐड करता हूँ। कल भी मैंने अपनी बात के दौरान ये बात बताई थी कि आप 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम्स के रिलेटेड, और उनकी वेबसाइट्स भी हैं, आप उन पे कंप्लेन लॉन्च करें। साइबर पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके पास पावर है कि वो उस पेमेंट को फ्रीज कर सकते हैं, और जब वो पेमेंट फ्रीज हो जाएगा तो रिकवरी के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। और काफी केसेस में मैंने खुद ये केसेस फेस किए हैं। कल भी मैंने एक केस आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, और इमीडिएट पुलिस को पता चलने के बाद 4.5 लाख रुपए फ्रीज होके बच गए थे, मिल गए थे तुरंत, और बाकी 50,000 जो ट्रेस करने के बाद पुलिस ने रिकवर करा दिए थे। तो ऐसा नहीं है, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाइए और अपनी चीजों को जितने कम से कम समय में आप चले जाएंगे उतने ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी रिकवरी हो जाएगी। मतलब जितना आप डिले करोगे उतना ही देर इज अ वेरी हाई चांस कि वो रिकवर हाँ नहीं हो सर, पाएगा। क्योंकि उसमें बात ये भी हो सकती है ना कि मान लीजिए जिसने फ्रॉड किया वो एटीएम से विड्रॉ कर ले तो फ्रीज कैसे कर पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो बहुत अच्छा सेशन रहा मेरे अकॉर्डिंग, और आपसे फिर वही सजेशन है कि अगेन जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको, उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझें, उनको देखें, अपने बेयर एक्ट्स चेक करें, अपने केसमेट्स चेक करें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉज को चेक करते रहें, क्योंकि आपको ये सब चीजें एज एन एडवोकेट आगे प्रैक्टिस करनी है, समझनी है, और ये आपको काफी हेल्प करेंगी। तो मेरी तरफ से ही था, धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स Thank you so आशु, much, sir. थैंक्स निमिषा। We had the privilege of attending such an insightful session from the experts who have shed great light on the significance of cybersecurity and provided insights into safeguarding our digital landscape. I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed guest speakers. Your insight and knowledge is invaluable, and we appreciate your commitment of sharing it with us. To all the attendees, your active participation is what made the event truly impactful. As we express our gratitude, let us also reflect on the impact this webinar had on all the attendees, with the hope that it leaves us inspired and with a stronger sense of responsibility in the ever changing field of cybersecurity. I am pleased to announce a forthcoming cybersecurity workshop later this week. This workshop aims to provide practical knowledge and skills for navigating the ever changing cybersecurity landscape. We encourage all interested participants to take advantage of this opportunity and enhance their proficiency in the field. As we wrap up the day two, remember that your awareness and active engagement contribute to a safer digital space. Thank you all for being a part of this meaningful journey. We look forward to interacting with you in the future as well. Thanks, Nimisha. Thanks, everyone. Thank you so much, sir.